Ramadan Kareem. Israel has over 1 million Muslim citizens. They play a vital role in our society. They are judges, lawmakers, professors, prominent doctors, business people, much more. Ready for a real surprise? Right near the Knesset synagogue, there's a Muslim prayer room inside our parliament building. Take a look. Some of Israel's parliamentarians are Muslim, so they need a place to pray, and they have it. More and more Israeli Muslims are integrating into Israeli society. That's exactly what I want to see. I want them to become part of the Israel success story. Israel is the Jewish state, the nation state of the Jewish people. But Israel is also home to Muslims, Christians, Baha'is, and so many others. In the free society that is Israel, all citizens enjoy full individual rights, regardless of race, creed, or gender. We live together, we learn from one another. We do so with mutual respect and with mutual understanding. I hope that one day all our neighbors will emulate this respect for human life and diversity. I want to wish Ramadan Kareem to Israel's Muslim citizens and to Muslims around the world. Kula am wa antum bkhair. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, يا عمي. Yaakov, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. زمن الصليبيين ويا جيش باكستان أسود الجبال ومحبي الإسلام هلم إلى مسرى نبيكم وأولى الخلفين فهلا اشتاقت دماؤكم للسجود فيه ويا جيش تركيا يا أحفاد السلطان محمد الفاتح وعبد الحميد هلم إلى ساحات المسجد الأقصى فقد ضاقت برؤيتكم ويا جيش الجزائر عشاق الشهادة وفلسطين هلم إلى أهلكم في فلسطين فإنهم يستصرخونكم ويا جيش إندونيسيا وإيران والحجاز وباقي بلاد المسلمين هنا القدس هنا مسرى نبيكم هنا أجساد أجدادكم من الصحابة العظام هنا أرضكم المباركة هلم فحرروها وطهروها يا جيوش المسلمين عامة نخاطبكم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. There is an unbelievable hatred of us. In Islam itself? You're going to have to figure that out, okay? You'll get another Pulitzer, right? But you're going to have to figure that out. But there is a tremendous hatred. And we have to be very vigilant. We have to be very careful. And we can't allow people coming into this country who have this hatred of the United States. I guess the question is... And of people that are not Muslim. Build alliances and form new ones and unite the civilized world
against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. Before we give you Zaid, and we'll give it to you. Right. To the Afghan people, we make this commitment. The conflict will not be the end. We will not walk away. Thanks to our military, our allies, and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. We've destroyed an enormous amount of the military infrastructure of the Taliban. The days of the Taliban are over. Yes, the Taliban have got time, but their game of waiting is a game that will not succeed. These Afghans searched for dead bodies after a US airstrike hit a wedding party. 35 civilians were killed and 38 injured. The bride is among the injured in Kandahar Hospital, along with other women and children. There was no question of us withdrawing our British troops. And as Commander-in-Chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan. A US operation in western Afghanistan killed some 90 civilians. The US at first denied that any civilians had been killed. I have two words for you: Predator drones. You will never see it coming. Listen to this 13-year-old Pakistani boy whose grandmother was killed in a drone strike. I have two words for you: Predator drones. I no longer love blue skies. In fact, I now prefer gray skies. The drones do not fly when the skies are gray, and for a short period of time, the mental tension and fear eases. This war has taken longer than most anticipated. But over the last 3 years, the tide has turned. We broke the Taliban's momentum. I think this country is a vast improvement on what we found in 2001, and I think our troops can leave with their heads held high over a job very well done. Nigeria and Afghanistan, possibly the two most corrupt countries. We will be deploying an additional 440 personnel to NATO's Resolute Support Mission in Afghanistan. There's anger and confusion on this pine nut farm. The drone strike came when workers were resting after a day's work. Don't the Americans see that they were just working and gathering pine nuts? Why do they attack ordinary workers? The Taliban wants to make a deal. There is no military path to victory for the Taliban. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. The Taliban declared the war in Afghanistan was over on Monday, after they took control of the presidential palace in the capital, Kabul. Seeing the sacrifices we've made as British soldiers, for it just to go up in smoke in a couple of weeks, you've just got to question, was it worth it? And for me, at the moment, for many of my friends messaging me, I don't think it was. We were told we were fighting terrorists. The real terrorist was me, and the real terrorism is this occupation. Poor and working people in this country are sent to kill poor and working people in another country to make the rich richer. And without racism, soldiers would realize that they have more in common with the Iraqi people than they do with the billionaires who send us to war. हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है. हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है. कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है. पिछले दिनों कहां क्या हुआ, घटना छोटी थी कि बड़ी थी, कश्मीरी बच्चों के साथ हिंदुस्तान के किसी कोने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
मुद्दा ये नहीं है, इस देश में ऐसा होना नहीं चाहिए। कहाँ है ये मुसलमान? क्या कर रहा है मुसलमान? कश्मीर के अंदर हमारी माँ मैनू बेटियों की से काफिरों के हाथों लौट रही है। वो बेटियां जिनके सर को कभी आसमान के सितारों ने नंगे नहीं देखा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उन बेटियों के कपड़े हिंदुस्तानी फौज फाड़ रहे हैं। अगर कोई भी या पाकिस्तान से जाके हिंदुस्तान में वो समझता कि कश्मीर में वो लड़ेगा या वो जहाद करेगा, वो सबसे पहले जुल्म करेगा कश्मीरियों से, यानी वो कश्मीरियों से दुश्मनी करेगा, क्योंकि वहाँ 9 लाख उन्होंने फौज रखी हुई है। उनको सिर्फ बहाना चाहिए है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी कश्मीरी तो हमारे साथ हैं, ये पाकिस्तान से दहशतगर्द जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस वक्त बच्चा बूढ़ा सारा कश्मीर हिंदुस्तान के खिलाफ हो चुका है। जो थोड़े से लोग भी थे, वो जो इन्होंने ये किया है, कर्फ्यू लगाया, सब इनके खिलाफ है। लेकिन उनको बहाना मिल जाएगा उनके ऊपर तशद्दुद करने का, जुल्म करने का, अगर यहाँ से कोई भी उनको बहाना मिल गया कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्द है। दूसरा, वो सारी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ कह देंगे जी देखें जी पाकिस्तान, असल में ये मसला पाकिस्तान की दहशतगर्द। I look around the world, what's happening in Palestine, Libya, Somalia, Syria, Afghanistan. Am I going to start talking about everything? I concentrate on what is happening on my border, in my country. This is on your border. which is part of, no, that is part of Pakistan. आखिरी चीज है, उसके बाद भी अगर आंख नहीं खुलती किसी इंसान की, तो मैं नहीं समझता कि वो अपने गिर्द उसने जो ये फला तुज़क्कू अनफुसकुम, उसने जो अपने गिर्द तस्किया नफ्स का एक मसनूई हाला बना लिया है, कभी भी वो उस हाले से निकल सकेगा अगर इस हदीस से भी आंख न खुली। और वो हदीस क्या है? मौलाना अशरफ अली थानवी ने उसको अपने जो खुतबात जुमा है उनमें नकल किया है, बैहक़ी की रिवायत है। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इला जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अनिक़लिब मदीनत कज़ा व कज़ा बिअहलिहा, अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत जिब्राईल को, फलां फलां बस्तियों को उलट दो उसके रहने वालों समेत। क़ाला फ़क़ाला, हुजूर ने फरमाया, इस पर हजरत जिब्राईल ने अर्ज किया बारगाह खुदाबंदी में, इन्न फीहा अब्दका फुलानन लम यासिका तरफत ऐन, परवरदिगार उस बस्ती को उलट दूं, उसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसर नहीं की। अब आप अंदाजा कीजिए, ये जो है ना अपने आप को रगड़ना और मांझना, और पूरी जिंदगी रगड़ने में और मांझने में लगा देना। हम बात बुजुर्गों के तस्करे में सुनते हैं, इतने अल्लाह वाले थे, इतने अल्लाह वाले थे कि उनका घोड़ा भी कोई मशकूक दाना नहीं खाता था, और वो खुद जो है वो अंग्रेज की अदालत में बैठे हुए और अंग्रेज की नौकरी कर रहे थे। ये है वो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का अदम तवाज़ुन। तागूत की चाकरी कर रहे हैं, अंग्रेज की मुलाजमत कर रहे हैं, अंग्रेज के कानून की तनफीज के अंदर आलाकार बन रहे हैं, लेकिन जाती तकवा और जाती नेकी और जाती लिल्लाहियत जो है उसका मेयार यह है कि उनका घोड़ा भी मशकूक चारा और मशकूक खाना नहीं खा सकता। यह है वो आदम तवाज़ुन, उसको नोट कीजिएगा, जिसको कि इस हदीस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि हजरत जिब्राईल अर्ज करते हैं कि अल्लाह फलां बस्ती को उलट दूं, उसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसर नहीं की। जाती नेकी का अब इससे ऊंचा कोई मकाम कोई शख्स मुझे अगर बता सके तो मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। इससे ऊंचा कोई मकाम होगा कि आंख झपकने जितनी देर भी किसी ने मासियत में बसर नहीं की, जाती नेकी की मेराज। लेकिन हुक्म क्या हुआ बारगाह खुदाबंदी से? काला फ़काला, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हुक्म लिया जिब्राईल को, इक़लिब अलैहि व अलैहि, उल्टो इस बस्ती को, पहले उस बदबख्त पर फिर दूसरों पर। क्यों? फ़इन्न वजहहु लम यतमअर फ़ी साअतल क़त, इसलिए कि इसका चेहरा कभी मेरी गैरत में सुर्ख नहीं हुआ, उस चेहरे का रंग नहीं बदला। बेगैरत इंसान, बदियां फैलती रहीं, मेरे दीन को रौंदा जाता रहा, मेरी शरीयत की धज्जियां बिगड़ती रहीं, अवामिर का मजाक उड़ाया जाता रहा, नवाही के लिए दुनिया के अंदर जिन चीजों से मैंने रोका उसके लिए फलसफे तराशे गए, और ये लगा रहा मस्त रखो जिक्र फिक्रे सुबह गाही में इसे,
یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقوی کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا کبھی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، لہذا یہ دوہرا مجرم ہے۔ یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے۔ ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، اقامت دین کے کارکن ہیں، فرض نماز آ گئی ہے وہ چلی جا رہی ہے، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اب یہ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ کہ وہ تزکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور مانجنے کا عمل جاری ہے، ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنی ذات سے بحث ہی نہیں۔ وہ کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ دوسری انتہا ہے۔ پھر وہی بات عرض کروں گا، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پہ چلنا ہوگا کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو، اپنی ذاتی اصلاح میں تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت، اقامت دین کی جدوجہد اس کا خانہ ہی نہیں کھولا زندگی میں۔